Okay, talking about your participation in Nach Baliye, you were very excited, when you were on stage and you wanted to do the show with Sandeep. You were very excited for that entire journey, but unfortunately, that accident happened. How did you take that entire period, Pooja? Because वो एक ऐसा वक्त था इंजरी के वक्त, आप पॉजिटिव भी हो सकते हो लाइफ को लेकर, नेगेटिव भी हो सकते हो लाइफ को लेकर, क्योंकि आपकी इंजरी इतनी बड़ी थी. सो हाउ डिड यू टेक दैट एंटायर पीरियड? हाउ वाज इट फॉर यू? मैंने आपको इनफैक्ट शुरुआत में ही बोला कि कोई भी सिचुएशन को लेकर नेगेटिव होना बहुत इजी है, बिकॉज दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी. हमें क्रिप करने की आदत होती है, मतलब वो बचपन से शायद आदत बन चुकी है क्रिप करने की, नुक्स निकालने की, नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकालने की, एंड इट्स नॉर्मल. It's very normal, but I was really trying very hard to be as positive as possible. I was also, to some extent, I was, and मैंने अपनी टीम को भी पहले बता दिया था that कि मैं शूट पे तो आने वाली हूँ, but there'll be days where I'll not be interested in talking to anybody. There might be a lot of mood swings. I might be depressed. Do not take me personally, and एटलीस्ट मैं काम पे आ रही हूँ, यही मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है. टू बी, आई वाज लिम्पिंग, मैं मतलब ठीक से वॉक नहीं कर पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, चीजें तो पकड़ ही नहीं सकती थी, कोई मुझे सीन में हाथ नहीं लगा सकता था. मैं अपने सारे सीन में दूर खड़ी रहती थी ताकि मुझे कोई हाथ ना लगाए. तो ऐसे सबको बोलना कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, but at least I'm working, that is a positive aspect. So that was the positive aspect कि इतना कुछ होने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मुझे अपना काम प्यारा है, मुझे अपने काम से प्यार है, तो मैं अपने सेट पे वापस जाऊंगी. लेकिन of course, again I'll say, one part of me was depressed. I was sad because that's also very natural for me. But I think that's how life is. There are days where you don't feel energetic, where you feel like giving it up. But then I think that's where your positive, like your optimism comes into picture, and people around you who matter the most. Specifically, ये phase में सबसे ज़्यादा पता चला है कि who are the ones who are really close to you, who mean the world to you, and I think लॉकडाउन के बाद लोगों को पता चला होगा ना बहुत सारी realities या फिर लाइफ थिंग्स सोच के विचार करने के बाद. वैसा ही कुछ मेरे एक्टिंग के दौरान हुआ था, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द थिंग्स व्हिच आई डिड नॉट डू, लाइक स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, माई हेल्थ. आई रियली मिस्ड आउट ऑन दैट. मेरा कैल्शियम लो था, हीमोग्लोबिन लो था. रियली वर्किंग on my body, on my mind, and I really worked a lot. Body as a nice, like internally eating the right food and everything, which really helped me right now to stay positive even in the times of corona. Because I've been through that now, and I realize it's not an easy stage. Again, I'll say that every day it's a challenge. Every day मेरे लिए एक चैलेंज भी था, एक मुश्किल फेज एक हर्डल था, क्योंकि हर दिन एक नया हर्डल. हाँ, आप सोचो कि मैंने मेरे साथ पूरा टाइम एक नर्स रहती थी, बिकॉज आई कुडंट गो टू द वॉशरूम बाय माई सेल्फ. आई कुडंट ईट माई फूड बाय माई सेल्फ. आई कुडंट पिक अप अ ग्लास ऑफ वाटर बाय माई सेल्फ. मैं ये सब कुछ काम नहीं कर पाती थी. उन दिनों में भी मैंने सोचा चलो ठीक है, इट विल बी अ फेज, इट विल पास. So whenever she used to help me, I used to cry that time, and I used to feel it's okay. चल एटलीस्ट ये सामने नहीं रो रही. पर फिर ये सारी चीजें लोगों को नहीं दिखाई दी, which is fine. लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ. If I have impacted even a one person, or if I have motivated, inspired even a single person, I think I'll feel content of that difficult phase of life. Yeah, because that is very inspiring कि इतनी चोट खाने के बावजूद, इतनी इंजरी होने के बावजूद, you were back on your sets and you were performing.
तो जो पिक्चर दिख रहा था, जो इमेज स्क्रीन पे दिख रहा था, वो ही दिख रहा था कि यार इतनी मुश्किलों के बावजूद शी इज स्टैंडिंग एंड शी इज परफॉर्मिंग, इमोटिंग इमोशंस, व्हिच इज लाइक ग्रेट थिंग। इनफैक्ट जब पहला दिन था ना कसौटी का, जब मैं पहली बार सेट पे गई थी एक्सीडेंट के बाद, आई रिमेम्बर एरिका शाउटेड सो मच, मतलब वो अपना सीन छोड़ के आ गई, करण भी शूट कर रहा था उस दिन, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, मैं डायरेक्टर लेफ्ट एवरीथिंग टू मीट मी एंड they hugged me and they started, they were like, you're back once, they couldn't believe it and I said, give me some time. पहले क्योंकि मैं सिर्फ 3-4 घंटे के लिए शूट करती थी, इससे ज्यादा टाइम मैं देती नहीं थी। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि they really love me so much, the love of the fans, the love of my co-actors, my team, my family, this is what has kept me going. Parneet wants to know one thing which she missed in Kasautii Zindagii Kay gang during lockdown. My friends, my co-actors, I miss them a lot. In fact, that's what we try to stay in touch with each other every week. We kind of, chat with each other, do good calls, video calls and all. So I miss, of course, shooting and all, we all miss that. But of course, I miss being with my unit, my team. एंड जैसे आपने बोला कि अभी संदीप के साथ एक लॉकडाउन में एक हनीमून पीरियड सा हो गया है, उस टाइम पे वो आपके कितने पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के खड़े रहे जब आप खासकर इंजरी हुई थी आपको? एक्चुअली उस टाइम पे द ओनली पर्सन whom I wanted to be with was संदीप। मुझे संदीप के अलावा कोई नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मैं because Sandeep that time used to wake up early at 4:30 to go for swimming and everything, and तभी मुझे ऐसा लगता था कि वही समझ सकता है, वही कभी, that's why there's a reason why they call you life partner or a soulmate, because lot of things when I didn't say he'll understand, lot of things before even me thinking in my head also, he'll think about it and he would make sure that the moment I met with the accident, he got the best dietitian, best nutritionist, the best physiotherapist for me so that I recover well, I recover nicely and everything. So he made all the efforts to make me, really enthusiastic about, the life after my recovery. And he would tell me, "अरे कुछ नहीं हुआ है तुझे, तू ठीक हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं है," and all that. So that's what I think was another वो जो pillar of strength आप बोल रहे, he genuinely was. अगर वो मेरे साथ में 24 नहीं होगा तो शायद समझ भी नहीं आता मुझे कि करना क्या है। जैसे आजकल मेंटल हेल्थ खासकर लॉकडाउन पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई है, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को कितना जरूरी हो गया अब लोगों को इसके बारे में ओपनली बात करना? क्योंकि काफी बार लोग अपने पेन से गुजरते हैं या इमोशन से गुजरते हैं, उसको अंदर रखते हैं, they don't share. Do you think especially during lockdown इतने सारे cases हो रहे हैं, it is very important to come out and speak about mental health? No, I think see, when I was in school we had a separate classes for people who would there was a proper 45 minutes का session, twice a month, every month 2 बार classes होती थी जहाँ पर there was a psychiatrist who used to come to the school, who used to talk to the children, and I am talking about 15 years back. So I am used to it. I am used to talking about mental health since childhood. So for me, I am surprised that people are not used to it. Yes. Because for me, I remember even when I was into swimming, my coach used to take me every month. तो स्कूल में एक अलग साइकियाट्रिस्ट था और स्विमिंग टूर्नामेंट्स में जाने के लिए मेरे कोच ने एक अलग से साइकियाट्रिस्ट रखा था जो हर महीने मुझे he used to take our classes. We had to write down everything. What are the good things of our, because that's how they understood. And this I'm talking about when I was in class 4, 5, 6 and 7. उस टाइम पे that's what I'm telling you. जब मैं आपको एक्सीडेंट के बारे में बता रही हूँ, मैं ओपन थी, मैं लोगों को बता रही हूँ कि भाई मुझे तकलीफ है, मैं डिप्रेस हूँ, मुझे बुरा लग रहा है चीजों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पर्सनली किसी से कोई दुखी हूँ या फिर कोई प्रॉब्लम है. आई माइट जस्ट से थिंग्स आउट ऑफ माय थिंग, so do not get affected by it.
I acknowledged it. मैंने अपनी प्रॉब्लम को समझा और मैंने उसको ठीक भी किया. But I am surprised that people don't talk about it. I'm still surprised that people are not okay to share something with your friends or with a random person also. If you are talking about the personal thing, why do you look down upon that person? Why do you judge that person? Why can't you just hear him out? So I think it's sad that people are now realizing it, which we've been following for years. Right. It's like a late. ये सब अभी नहीं, ये सब स्कूल के दिनों में होना चाहिए. और स्कूल के दिनों से ही पेरेंट्स को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा स्ट्रांग है. I know that. I know in my family, I know that in my friend circle who was weak, who wasn't. And I know that very nicely. And in fact, we were also told about it. That this child, imagine a class 5 student or a class 6 standard student, they are being told, be nice to this child because he is not very strong. So we used to talk about that, like ages back. So I think we should not talk about it right now. We have to start it when you're young. Young, yeah, true. Yeah. Lastly, before winding up, I want to know, काफी सारे questions आ रहे हैं कि are you in touch with your roadies, contestants? I'm not in touch. I'm in touch with, very vaguely, I'm in touch with Ranvijay, Raghu and Mohit. Only 3 people. That nobody else. And I forgot also who all were there. Thank you so much, Pooja. You take care of yourself. Stay happy, stay blessed, and stay safe.